Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through English Murli, that is 8th April 2021. Baba is telling, sweet children, today you have to be very sweet and become flower and give everyone the happiness. Children who are flowers only allow jewels to emerge from their mouth. Children who are flowers only allow the jewels to emerge from their mouth. Today question: what are the teachings of God for the children who are to become flowers so that they remain constantly fragrant? Answer: oh my flower children, examine yourselves to check that you do not have any devilish thorn in the form of defect within you. If you have any thorn within you, then just as you dislike the defect of others, similarly dislike the devilish defect you have within yourselves, and the thorn will be removed. Continue to examine yourself. Check that you do not perform any sins through your thoughts, words, or deeds, for which you would have to experience punishment. Baba is telling you think that whatever the devilish act, the defect you have, that is just like a thorn. It may be pricked to you, so you won't feel discomfort. You won't feel discomfort. So you think that while others having the devilish trait, how you are just dislike this. So you dislike yours devilish act or defect. Then today essence for dhana, number 1 point. In order to be saved from the bad omens of Maya, only allow jewels of knowledge to emerge from your mouth. Be very careful of the company you keep. Number 2. In order to become a fragrant flower, continue to remove the defect. Follow Srimad and become very humble. Never be defeated by lust. The greatest enemy, save yourself with tact. Today blessing, while you are receiving the blessing, visualize that. While you are receiving the blessing, visualize that Bab Dada's blessed hand is above your head and you are receiving the blessing. May you remain free from limited things and remain constantly engaged in doing unlimited service with your powerful attitude. Just as Sakar Baba could not see anything but service, in the same way you children also have to remain engaged in doing unlimited service with your powerful attitude, and all limited things will then automatically finish. To give time to limited things is like playing with dolls in which time and energy is wasted. So do not waste your time or powers you have accumulated in trivial matters. Slogan: in order to achieve success in service, let your words, behavior and activity be influential. In order to achieve success in service, let your words, behavior and activity be influential. So today Baba is telling you have to be your behavior like such that there should be have some positive effect. So Baba is telling तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है. फूल बच्चे मुख से रतन निकालेंगे. फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिसे वो सदा खुशबूदार बना रहे. हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है. अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, ऐसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा. अपने को देखते रहो. मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विक्रम तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े. बाबा कह रहे चेक करो. मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कोई विक्रम तो नहीं हो जिसका दंड भोगना पड़े. माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन
निकालनी है, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालकर दैवी गुण धारण करनी है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है, वरदान है। सदा पावरफुल स्मृति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भवो। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भवो। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।